10th class. Today our topic is respiration. Respiration, it consists of two phases. First is breathing. Second is cellular oxidation. Cellular oxidation of food material. First, that is breathing. It further consists of two phases. First is inhalation. Second is exhalation. If we talk about inhalation, inhalation is intake of air. And you know the composition of air. Air consists of oxygen 21%, nitrogen 78%, carbon dioxide 0.03 to 0.04%. And if the air is having this composition and other traces are also present, water vapors are present, this is called प्योर एयर. अब आप सांस लेके देखें, जब हम सांस ले रहे हैं देन वी आर टेकिंग दिस एयर, दिस इज कॉल्ड फ्रेश एयर. इन दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन आवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एक्सेलेशन, एक्सेलेशन को बोलेंगे नॉर्मली हम सांस छोड़ना. इन दिस वी एक्सहेल the air that is having more amount of carbon dioxide as compared to the fresh air and less amount of oxygen as compared to fresh air. Then what is the purpose of this breathing? This breathing take out the carbon dioxide from the deoxygenated blood and make the blood oxygenated with the help of oxygen taken by inhalation. Now what is the purpose of this oxygenated blood? This oxygenated blood is returned to heart, that is the left side of heart that always contain pure or oxygenated blood, and heart distribute this to each and every cell of the body. If we talk about the cell, in our cell food material is present, and this food material it come through absorption of the food after digestion, and now the blood it distributes the oxygen to each and every cell of the body. With the help of this oxygen, oxidation of food material take place, and in this oxidation carbon dioxide is generated and oxygen is utilized. This carbon dioxide is further taken by the blood. अब ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट है एंड यू नो अबाउट दिस पिगमेंट दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है. हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है. कैरी दिस कार्बन डाइऑक्साइड. When the hemoglobin carry carbon dioxide, now the blood is called deoxygenated blood. This deoxygenated blood is collected from all parts of the body and goes to right side of the heart, and right side of the heart distribute this to the lungs for purification. Then here we first discuss about breathing. In the breathing, first we discuss about inhalation. जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मसल हैं जो काम करते हैं. उससे पहले आपको अपना रेस्पिरेटरी पाथवे पता होना चाहिए. What is our respiratory pathway? Our respiratory pathway start from the nostril. What are these nostrils? These are the two small opening in the nose. आप देख भी सकती हैं, फील भी कर रहे हैं. इन्हीं से हम एयर को अंदर लेके जा रहे हैं. नेक्स्ट इज
nose, which is divided into right and left side with the help of a septum. अब जो ये बाहर वाली ओपनिंग है जिनको हमने नेरिस बोला, ये अंदर की तरफ खुलती हैं, इनको अंदर की तरफ बोलते हैं इंटरनल नेरिस. देन कम द पार्ट ऑफ फेरेंक्स, that is called nasopharynx. Then come the windpipe, that is called trachea. Trachea is the windpipe. This trachea further undergo branching. ये अगले लेक्चर में डायग्राम से आपको समझाया जाएगा. ये जस्ट हम पैसेज बता रहे हैं. पैसेज हमारा ट्रेकिया तक है और उसके बाद ट्रेकिया के फिर डिवीजन होती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, और लास्ट में आ जाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन. दीज आर कॉल्ड लंग्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी पैसेज एंड द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन.